Hello guys and welcome back to this beautiful series of segment trees. Segment trees में हम polynomial updates की बात कर रहे थे and we have done all the theories related to it. Today we are going to do a very famous question from the cses problem set related to this polynomial updates. Let's make our concepts crystal clear. So this is going to be the last video on the 1D segment trees section. We've already done point updates range queries, range updates point queries, range updates range queries, and we are doing polynomial updates and range queries, which is kind of like generalizing all these three concepts earlier. Once we are done with the 1D segment tree sections, we'll be moving ahead with 2D segment trees and data structures inside the segment trees. So let's see a CSS problem set on this polynomial updates and range queries. So the question is something like this: CSS problem set polynomial queries. You're given an array of n values and you have to process the following queries. There are two different kinds of queries. Second kind of query तो देख के आपको समझ में आ जाएगा. Calculate the sum of values in the range A to B. So what is this? This is simply our range query, right? And range query करने के लिए we are going to have a value inside our node. Next is increase the first value in the range A to B by 1, second value by 2, third value by 3 and so on. So basically you will be given a range A to B और उस रेंज की फर्स्ट वैल्यू को आप में +1 करना है, सेकेंड वैल्यू को +2 करना है, थर्ड वैल्यू को +3 करना है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दिस इज काइंड ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ द रेंज अपडेट्स, राइट? सो ध्यान से अगर आप देखोगे तो इस रेंज अपडेट को यू कैन वेरी क्लियरली सी कैन बी रिप्रेजेंट बाय द रेंज or rather the polynomial update function using the polynomial p of x equals to x plus 1, right? So this is basically my observation. अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे so x plus 1 is a polynomial which is actually defining this update. x की वैल्यू को अगर मैं 0 रख दूं, x की वैल्यू को 0 रखूंगा so which I'll get my first cell and the first cell should be increased by the 1 which I'm getting. x की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं which is my working index को अगर मैं 1 रख दूं so I'll get the second value and it is increased by 2 which is 1 plus 1. Similarly third is increased by 3 and third value का working index क्या हो जाएगा? I is equals to 2. So अगर मैं x की जगह 2 रख दूं, अगर working index की जगह 2 रख दूं so I'll get 2 plus 1 which is equals to 3. So third value is actually increased by 3. So this is a simple polynomial function p of x which is equals to x plus 1. What's the beauty? Beauty is this function is linear first of all and इसकी complexity k की वैल्यू simply क्या है? 2. k की वैल्यू 2 है which means I only have degrees to write. So I need not to worry much about the other. So summation x की power r वगैरह की terms आती है. I need not to much worry about them. We'll see them when we're going to solve this question. Right, so okay, this is a question of polynomial updates and range queries. So input में we will be given n and q, we will be given the entire array जिसका initial contents हमें given है and there are two different kinds of queries. अगर 1 है so it's a range update, अगर 2 है it's a range query. And we have to output print the answer to each of the sum queries. So each of these two queries का आपको sum output करके देना है. n and q की normal values हैं 2 into 10 power 5, t is 10 power 6 and a b is less equals n. Fine. So we are going to start with how do we actually go ahead and code this polynomial queries question from the CSS problem set. So this time I have taken snippets from my VS Code and I am not actually going to code in the VS Code. This is because I actually need to explain more in this polynomial wala question rather than to code more, right? So explain करने के लिए I need to write something, so we are just taking the snippets over here. So सबसे पहले we need to take care of our node class. So node class को हम change करेंगे. हमने पढ़ा था कि node class में initially we used to have a value and z0 से लेकर zk तक these are my lazy text which I need to keep in my mode. Now k is equals to 1 here because what is my polynomial function? My polynomial function p of x is actually equals to 1 plus x, or I can also write it as 1 into x power 0 plus 1 into x power 1. So this essentially will become my z0 into x power 0 and this will become my z1 into x power 1. So there are two z values and a one value which represents my range query, right? So this value is used for my range query and these are used for my range updates. So overall मेरे node में कितनी value होंगी? One is v, other is z0 and z1. So this is represented over here.
This value represents my range query's value, and this z0 z1 represents my polynomial function p of x represented by the node. Again, then in the constructor, as you can see, num is equals to 0, वैल में मैं num भर दूंगा. z0 एंड z1 की डिफॉल्ट वैल्यूज मैंने 0 डाल रखी हैं. अब ध्यान से समझना कि डिफॉल्ट जीरोस क्यों है. डिफॉल्ट इट मींस अगर मैं z0 z1, सो दिस इज माय p of x which is represented over here. This is z0 into x0 plus z1 into x1. अब अगर मैं z0 और z1 दोनों को 0 डाल दो, so simply I would get 0 plus 0 which is 0. So this essentially represents no update, no ongoing updates, right? And this is actually which I want in my default, right? Default का मतलब क्या है? जब मैं न्यू नोड बनाऊंगा तो उसके वैल्यू में मैं num डाल दूंगा एंड उसके zi's को मैं 0 कर दूंगा, because I don't want any update to be ongoing at the present moment when the node has been created, just right? So सारी zi's की वैल्यू 0 हो जाएंगी and this is my default node. So we are done with our node structure. Node के structure में there are 3 values and we have made a constructor. After this we'll create our SL tree class. Now SL tree class is exactly, believe me, it is exactly the same what we have already done till now. अभी तक हम जो भी करते आ रहे हैं, हम we create SL tree class, then we create 3 member variables n, a and t. n represent number, a represents the array, t represents a tree array. Similar to that, exactly same SLT class होने वाली है. Then SLT का जो constructor होने वाला है, that is also going to be exactly the same. जो build function होने वाला है, that is also going to be exactly the same. जो merge function होने वाला है, that is also going to be exactly the same. There's a short question. Merge function ये क्यों same होगा? Merge function में तो हम sum करते हैं, right? So see, I have already told these things to you. Merge function is actually not dependent anywhere on the updates. Updates कुछ भी हो, merge function is literally, it does not care anything about the updates. Merge function is completely dependent on the range query, and query हम किस पर कर रहे हैं? Sum values पे कर रहे हैं. So merge function is simply dependent on the sum. Main change कहाँ होने वाला है? Main change is going to be in the push function. Because हमने देखा ना, lazy update जब हम करेंगे तो push function is actually where all the main updates are going to happen. And push function में there are 2 subroutines, which is lazy merge and lazy correction. So let's look at them one by one. We'll be starting with lazy merge. So basically, if I draw the diagram over here, this is my node, which जिसके index है मेरी k. So this is my kth node, and this is represented by the range L to R. इस नोड के पास initially एक वैल्यू होगी v, and lazy tags होंगे z0 and z1, which is already present with my node. मैं क्या करने वाला हूं, इस नोड के ऊपर से, सो द पेरेंट माइट हैव गिवन इट 2 लेजी टैग्स z0 and z1. So let's call this polynomial function p from parent, or rather let's call it q, and let's call this polynomial function p. So मेरे नोड के पास ओरिजिनली एक p polynomial function है which is z0 z1, and q polynomial function is coming from above which is z0 z1. And I need to merge this p and q together. अब इसको merge कैसे करेंगे? Look at this. Since this is also a polynomial function with 2 degree, this is also a polynomial function with 2 degree. हमने वो diagrams बनाए थे जिसमें if you remember ये 2 diagrams बनते हैं, and in diagrams में हम simply क्या करते हैं? Left वाले child में since हमारे जो working indices होते हैं i's, they are going to be exactly the same. So हम simply क्या करेंगे? p और q को add कर देंगे. So in order to get my p equivalent, this is actually equals to p plus q. So p equivalent of x is equals to p of x plus q of x. Now what is p of x? P of x is simply z0 plus z1 into x power 1. What is q of x? Q of x is simply, okay, let me name it other way around. Let's call it z0 dash and z1 dash. So this function would be z0 dash plus z1 dash into x power 1. And simply if I'll go ahead and sum these 2 polynomial functions, so polynomial कैसे sum होंगे? z0 plus z0 dash plus z1 plus z1 dash into x. So this is my equivalent. So this is my p equivalent, right? So equivalent polynomial function निकालने के लिए if you see जो मेरे x0 वाले टर्म, x0 डिमेंशन होता है, उस डिमेंशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो लेजी टैग है वो क्या है? सिंपली z0 plus z0 dash. This is exactly what I've done here.
tk at z0 प्लस इक्वल्स टू z0। एंड सिमिलरली मेरे जो x1 वाली डिमेंशन है उस डिमेंशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो लेजी टैग है वो भी सिंपली ऐड हो गए हैं। सो आई हैव डन tk at z1 प्लस इक्वल्स टू z1। फाइन, सो होपफुली आपको लेजी मर्ज वाला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेट्स मूव टू लेजी करेक्शन। लेजी करेक्शन वाला थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज लेजी करेक्शन में आपको जो इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला वी रोट इन अ प्रीवियस वीडियो, so let me write it again. My value new is actually equals to my value old plus summation of, so we'll write x equals to 0 all the way up till r minus l into p equivalent of x. Correct? Okay, rather since we're just correcting, we have a polynomial function with itself, right? So we need not write any equivalent. So this will be value old plus summation x equals to 0 r minus l. What is my p of x? Since my polynomial is of degree 2, k की value क्या है? Simply 1. So degree 2 है, so I would simply have a z0 into x power 0 plus z1 into x power 1. So I can just split up this summation. So ये हो जाएगा summation x equals to 0 से r minus l into z0 plus summation x equals to 0 से r minus l into z1 into x. So you all must be knowing the sum formula. So finally what I'll get is v0, which is my old value, plus z0 बाहर आ जाएगा into r minus l plus 1 plus z1 बाहर आ जाएगा, and this formula, so if r minus l plus 1 is taken, so it's summation of x, summation x का formula क्या होता है? n plus 1 by 2. So this would be r minus l multiplied by r minus l plus 1 divided by 2, and this is my value new. So this is exactly what we do in lazy correction, right? So value new की value old plus these guys, and this is exactly what I have written over here. So lazy correction में मैंने क्या किया है? KLR. So K is my kth node, LR represents the range represented by my kth node. So T at K dot val में मैं plus equals to कर दूंगा this guy. What is this guy? This guy is over here. So Z0 into R minus L plus 1. It is exactly over here. Then TK into Z1. So Z1 is my Z1 over here. And R minus L plus 1 divided by 2. Correct? So I hope these things are clear. So lazy merge भी clear हो गया होगा. Lazy correction भी clear हो गया होगा. We can now move ahead with our push function. So basically our push function easy हो जाएगा. So push function में सबसे पहले हम क्या करेंगे? Simply we firstly check कि हमारे lazy कुछ है भी या नहीं. So basically Z0 और Z1 अगर दोनों 0 हैं, so there is no lazy, so there is nothing to push. So we can just skip this. Otherwise we'll move ahead. सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेजी करेक्शन करेंगे, हमारे नोड को करेक्ट करेंगे. नोड करेक्ट होने के बाद वी नीड टू मेक आर लेजी टैग्स की वैल्यू को चेंज करेंगे, राइट? सो इफ एल इज नॉट इक्वल्स टू आर, मतलब मेरे पास एक लेफ्ट चाइल्ड है, मेरे पास एक राइट चाइल्ड है. सो मैं क्या करूंगा? मैंने करेक्ट कर लिया. अब मैं अपने लेजी टैग्स जो कि Z0 Z1 है उसको अपने बच्चों को भेज दूंगा. सो एल मिड इज इक्वल्स टू एल प्लस आर बाई 2. आई विल मर्ज टू द लेफ्ट चाइल्ड, आई विल मर्ज टू द राइट चाइल्ड. सो मैं अपने लेफ्ट वाले चाइल्ड को भेजूंगा tk.z0 and tk.z1. So z0 z1 मैंने लेफ्ट चाइल्ड को भेज दिया, बट देयर इज समथिंग पेक्युलर ओवर हियर. राइट चाइल्ड में ये क्या चीज है? इफ यू रिमेंबर लेजी मर्जिंग वाले जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे इन द लास्ट वीडियो, उस कॉन्सेप्ट में मैंने बहुत ही ध्यान से आपको समझाया था कि जब लेफ्ट चाइल्ड में हम लेजीज को पास करते हैं और राइट चाइल्ड में जब हम लेजीज को पास करते हैं, सो लेफ्ट चाइल्ड में तो हमारे जो वर्किंग इंडिसेस होते हैं दे आर सेम, बट राइट साइड में वर्किंग इंडिसेस में देयर इज अ शिफ्ट ऑफ मिड प्लस एल माइनस 1. सो मिड प्लस एल माइनस 1 का राइट साइड में एक शिफ्ट आ जाता है. सो उस शिफ्ट को के चलते यहां पर अगर हम लिखते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? दिस P इक्विवेलेंट इज सिंपली P लेफ्ट का प्लस P पेरेंट का. बट यहां पर जब हम लिखेंगे, यहां पर P इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? P राइट का प्लस P पेरेंट का, बट विथ अ शिफ्टेड वैल्यू. सो x माइनस मिड प्लस L माइनस 1. राइट? सो दिस इज P इक्विवेलेंट एट x एंड दिस इज PR एट x. सो बेसिकली यहां पर वही चीज हुई है.
लेफ्ट साइड में मर्ज करने के लिए मैंने सिंपली क्या किया, z0 z1 विच इज एग्जैक्टली p, मैंने p को सेंड कर दिया तो ये लेजी मर्ज में जाएगा और p को यहां ऐड कर लेगा। बट राइट चाइल्ड में मैंने सिंपली p को नहीं भेजा है। दिस एक्चुअली दिस एंटायर थिंग एक्चुअली रिप्रेजेंट्स p ऑफ x माइनस द शिफ्ट वैल्यू, लेट्स कॉल इट s। सो इसको कैलकुलेट करते हैं, हाउ आर गोइंग टू कैलकुलेट द शिफ्ट वैल्यू, राइट? Okay, so the shift here actually has to be mid minus L plus 1 and we need to find P of X plus that shift. Now why is it that? So this is my array, this is my Lth index, this is my Rth index and somewhere over here is my mid and this guy is my mid plus 1. So because of my P function, P की वजह से यहां पर क्या सम होना चाहिए, P of mid minus L plus 1. So because mid minus L is my working index and mid minus L plus 1 will be the working index at this particular point, right? अब मुझे इसे क्या कन्वर्ट करना है, I have to convert it in the form कि जब मैं P equivalent में x की जगह 0 डालूंगा then I should get this, x की जगह 1 डालूंगा then I should get mid minus L plus 2. So वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्चुअली फाइंड करना पड़ेगा P of x plus this quantity, right? mid minus L plus 1. Because अगर आप इसमें देखोगे x की जगह में 0 डाला at this point, because इस पॉइंट का राइट साइड राइट हाफ में इस पॉइंट का वर्किंग इंडेक्स क्या है, 0, बट p के लिए वर्किंग इंडेक्स क्या है, mid minus L plus 1. Therefore राइट हैंड साइड में जब x की वैल्यू को मैं 0 डालूंगा तो p की वैल्यू मुझे क्या मिलनी चाहिए, mid minus L plus 1. सो बेसिकली मैं राइट साइड का वर्किंग इंडेक्स से p का वर्किंग इंडेक्स में ट्रांसफॉर्म हो रहा हूं. Therefore I have to calculate x plus mid minus L plus 1. And let's see how we can calculate this. So p of x is clear, right? What is p of x? P of x is my parent का function. So this is simply going to be z0 plus z1 into x. So therefore p of x plus mid minus L plus 1. Let's calculate this. So this would be z0 plus z1 into, अब x की जगह में I'll simply put x plus mid minus L plus 1. So this would give me z0 plus z1 into x plus, what is mid? Mid is nothing but L plus r by 2. Simply write L plus r by 2 minus L plus 1. So मैं x वाले टर्म्स को अलग कर दूंगा एंड कांस्टेंट वाले टर्म्स को अलग कर दूंगा. So I would get z0 plus z1 into L by 2 plus r by 2 minus L plus 1 from the constant side and z1 into x from the x वाली side. So this would be z0 plus z1 into r minus L by 2 plus 1 plus z1 into x. Finally, so this is my p of x plus 1 and इसको मुझे p of r में ऐड करना है. So let's call this function, ये जो मुझे न्यू पॉलिनोमियल फंक्शन मिला है, let's call it q of x. So मैं क्या करूंगा, simply I would go and pass this q of x, this is my function, you can just see कि same है, right? So z0 plus z1 into r minus L by 2 plus 1, it is exactly we have written over here, and z1 into x. So x वाली साइड में मुझे मेरा सिर्फ z1 है. So this new function which is my q of x, so p of x मैंने x plus x और rather q of x, इसको मैंने पास कर दिया मेरे ओरिजिनल राइट वाले फंक्शन में. So मैंने राइट वाले फंक्शन को इसको मर्ज करने को दे दिया. फिर लेजी मर्ज वाला क्या करेगा, उन दोनों को एज एन इनपुट्स लेगा और उन्हें मर्ज कर देगा आपस में. फाइन. सो पुश फंक्शन में मैंने राइट साइड लेफ्ट साइड को मैंने पास कर दिया मेरा लेजी टैक्स एंड राइट साइड को पास कर दिया. If I am at a leaf, so this is when I am at a leaf. So leaf में simply क्या करूंगा मैं, a at l plus equals to t at dot 0. So simply I am just making my values better, right? Then simply after doing these things, so मैंने correction कर लिया, मैंने lazies को pass कर दिया to my children, उन्होंने आपस में lazies को merge कर लिया. अब मैं क्या करूंगा, अपने lazy text को 0 कर दूंगा. तो मैं अपना z0 और z1 दोनों को 0 कर दूंगा. And with this we are done with our push function. Fine. So with the push function, you are left with only a small update you need to do in the update function. So update function में छोटा सा आपको change करना है. So basically k l r represents the index and the range represented by that node. L q r q represents the range of the query, which is a and b itself. h0 and h1 represents the coefficients of my polynomial updates.
which are essentially over here. What is this? H0 is simply 0, it's 1 and H1 is also 1. So जब भी अपडेट करते हैं हम पुश कर लेते हैं. See, all these things are going to be exactly the same. The only change is going to be at this point. इस पॉइंट पे आके हम क्या करेंगे? tk at z0, जीरो वाली टर्म को हम चेंज कर देंगे फ्रॉम s0 प्लस h1 इंटू l माइनस एल क्यू. z1 वाले को मैं सिंपली h1 बोल दूंगा एंड आई पुश इट. So this is exactly so. Try to understand this. So इसको समझने के लिए let me make another diagram over here. So this is my L. So okay, this is my LQ. This is my RQ. What is this? It's a range over which I'll have to do an update of the polynomial function p of x, which is equals to h0 plus h1 into x. Correct? अब मेरी जो नोड है, which is my kth node, इस kth node के the range है L to R. So it lies somewhere over here. So at this point, this is my L, and at this point, this is my R. So this is where my entire range lies inside the LQ and RQ. So L is less equals LQ and R is less equals RQ. So मेरी range अंदर आ जाएगी. In this, I need to change. So basically मुझे क्या करना है? When I need to update, I need to create a new polynomial function P equivalent for this range, right? और उसके लिए अगर आप स्टार्ट करोगे सो वर्किंग इंडेक्स यहां से स्टार्ट होगा 0, 1, 2 ऑल द वे अप टिल r माइनस एल. सो दीज आर द वर्किंग इंडेक्सेस फॉर माई L to R रेंज. बट अगर मैं इस LQ RQ रेंज को देखूं तो इसका वर्किंग इंडेक्स क्या हो जाएगा? सो दिस इज 0, दिस इज 1 और ये वाला वर्किंग इंडेक्स आ जाएगा L माइनस एल क्यू. सो बेसिकली जो मेरा ये px वाला पॉलिनोमियल कह रहा है इट नीड्स टू डू एन अपडेट ऑन दी LQ टू RQ, बट मुझे उसे चेंज करना पड़ेगा फॉर पॉलिनोमियल टू बी इन द अपडेट L to R. सो देयर इज अ शिफ्ट ऑफ L माइनस LQ इन द पॉलिनोमियल इन अ वेरी सिमिलर वे जैसे हमने पहले किया था. सो L माइनस LQ का यहाँ पर शिफ्ट आ जाएगा. सो मुझे क्या करना पड़ेगा? P ऑफ माई ओरिजिनल फंक्शन x प्लस दिस शिफ्ट. एंड व्हाट इज शिफ्ट? शिफ्ट इज L माइनस LQ. तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो जो प्रीवियस कैलकुलेशन हमने किया था इन अ वेरी सिमिलर वे आपको z0 और z1, द न्यू z0 और z1 फॉर दिस p इक्विवेलेंट वो क्या आ जाएगा? h0 प्लस h1 इंटू l माइनस एल क्यू. व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द शिफ्ट, जितना मुझे यहां से यहां शिफ्ट करना पड़ा. एंड z1 वुड बी सिंपली h1 एंड देन यू अगेन पुश एंड रिटर्न. एंड दिस इज एग्जैक्टली जो हम पहले अभी तक करते आ रहे हैं. विद दिस हमारा अपडेट फंक्शन भी कंप्लीट हो गया. सो वी आर डन विद द एंटायर कोडिंग ऑफ this CSS problem set of the polynomial updates, right? Next, we are done with the 1D segment tree वाला section. We'll be starting with the 2D segment trees and how segment tree के हर node में हम एक segment tree घुसाने वाले हैं. So stay tuned, stay with us, let's move ahead. We hope you liked this video and it was able to add some value to your DSA and coding journey. Do hit the like and the subscribe button and see you again.